Welcome back, students. Now we will study next chapter, present continuous tense. Next topic is present continuous tense. The present continuous tense is used for actions which are taking place at the time of speaking. Present continuous कौन से एक्शन को शो करते हैं? जब कोई एक्शन चल रहा है, जब कोई काम चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम रीडिंग ए लेटर, आई एम गोइंग टू मार्केट. वो काम कॉन्टिन्यूसली चल रहा है. रूल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. First of all, you will write subject. What is the subject in this sentence? Subject plus is, are, am. These are the helping verbs. Is, are, am. Then verb, first form of the verb plus ing plus object. This is the rule for present continuous tense. For example, he is writing a letter. For example, these are the simple sentences, beta. For example, he is writing a letter. He is writing a letter. Second example is, I am going to school. Third is, they are going to market. Students, rule for present continuous tense. First you will write subject, then is, are, am plus verb, first form ing, then object. In example number first, he is writing a letter. He means third person and singular form. Is helping verb, write main verb plus ing, then object. Beta, is used for singular things, singular persons. I, but third person. I stands for I am, singular. Am is used with I. And where can we use are? They, plural forms, third person. They are, we are, these are, those are, he is, she is, it is. So these are the examples of present continuous tense. This is the simple present continuous tense. In the next topic, in negative form. Next is in negative form. In negative form. The negative is formed by adding am, are, is या is, are, am plus not to the present participle form of the verb. We can say subject plus is, are, am plus not, then first form of the verb plus ing plus object. In the negative form, for example, बेटा नेगेटिव फॉर्म में हम क्या करते हैं? इज नॉट, आर नॉट एंड एम नॉट. ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल. फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल. Going to school. I'm not eating the food.
I'm not eating the food. They are not coming. They are not coming. So these are the examples in negative form. Third is beta interrogative formation. Third is in interrogative form. इंटेरोगेटिव फॉर्म क्या यूज़ करेंगे हम? टू फॉर्म द इंटेरोगेटिव द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑक्सिलरी आर इंटरचेंज्ड. जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं और जो आपका सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है, वो इंटरचेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इज शी कमिंग, इज शी कमिंग. लास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो भी होते हैं आपके इंटेरोगेटिव फॉर्म में, जो भी आपके सेंटेंस हो गए उनके लास्ट में क्या यूज़ होगा? क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा, जिनकी हेल्पिंग वर्ब और या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर सब्जेक्ट दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे. सेकंड एग्जांपल, आर यू वर्किंग, आर यू वर्किंग. Is she crying? Is she crying? So these are the examples in the form of interrogation. So students, this is the complete topic related to your present continuous tense.